Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Paul Thotham, and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र की ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से जुड़ी ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर ए.के. भट्टाचार्य। ए.के. कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। आइए शुरुआत करें अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं पॉल थॉटम। Benchmark domestic stocks fall for third session in a row. Sensex loses 169 points to 37,121. Nifty slips 45 points to 11,294. Rupee bounces back from its record low to trade at 72 rupees and 37 paise against the US dollar, and Brent crude prices ease to trade around $78.30. घरेलू शेयर बाजार में लगातार तीसरे सत्र में हुई गिरावट। सेंसेक्स 169 अंक फिसलकर 37,121 पर हुआ बंद। निफ्टी 45 अंक कम होकर 11,294 पर आया। $1 की तुलना में रुपए में आज मजबूती वापस लौटी। अपने न्यूनतम स्तर से ऊपर उठकर रुपया आज 72 रुपए 37 पैसे के स्तर पर पहुंचा और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $78.30 प्रति बैरल के आसपास आई। घरेलू शेयर बाजार में लगातार तीसरे सत्र में आज भी गिरावट का दौर हमें देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सकारात्मक रुख और रुपए में मजबूती के बावजूद निवेशकों ने बिकवाली जारी रखी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 169 अंक यानी 0.45% कम होकर 37,121 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.39% घटा और 45 अंक कमी के साथ 11,294 पर आ गया। पिछले 3 सत्रों में सेंसेक्स लगभग 970 अंक नीचे आ चुका है। छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों में आज बिकवाली कहीं अधिक तेज देखने को मिली। बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स 0.98% घाटे में रहा, जबकि मिड कैप इंडेक्स 0.72% नीचे आकर बंद हुआ। Benchmark domestic stocks today lowered for the third straight session as very investors pared their portfolios even as the rupee staged a recovery and global equities shrugged off the US-China trade tensions. Sensex at the Bombay Stock Exchange lost 0.45% or 169 points to 37,121. The Nifty at the National Stock Exchange also fell 0.39% or 45 points to 11,294. The 30-share Sensex has now lost about 970 points in 3 days, largely due to rupee woes, high crude oil prices, unabated foreign fund outflows, and escalating trade tensions between the US and China. In the broader markets, the BSE Small Cap Index tripped 0.98%, while the Mid Cap gauge dropped 0.72%. IndusInd Bank was the top loser in the Sensex pack, sinking 3.03%, followed by Maruti Suzuki at 2.30%. Sector-wise, the BSE FMCG index emerged as the worst performer by sliding 1.09%, followed by finance 1.01%, realty 0.96%, consumer durables 0.80%, healthcare 0.59%, power 0.52%, BankX 0.51%, and auto 0.42%. On the other hand, metal rose by 1.25%, oil and gas by 0.98%, PSU 0.41%, IT 0.15%, and tech 0.07%. AKB. Today's sentiment seems to be pretty negative. At the same time, the market doesn't seem to be very bothered, they say, with the ongoing trade war, but the rupee did well.
Why do you think there was a negativity? Well, I look at it as a continuation of the bearish trend in the markets. I think what has been happening for the last 1 week is markets' obsession or preoccupation with three broad issues, and that seems to be a narrative that will probably continue for some more days to come. Number one, you have the continuing and escalating currency and trade war between the US and the Chinese economies. Number two, crude oil prices continue to remain volatile. It goes up one day and comes down a little bit the other day. And number three is it has an impact on India's rupee. Now, you would take all the three factors together, what you are seeing is the market is reflecting the nervousness and the sense of uncertainty of what lies ahead. You must note that the market stayed away from this trend just for a day when the government came out with an announcement of amalgamating three major public sector banks, and the markets responded to that news with some movement, but it didn't take long for the markets to come back to its overall abiding mood of uncertainty as a result of these three factors that I mentioned: current trade war in the global scenario, the crude oil price movements, and the impact on India's currency. But we've noticed that the large caps are doing pretty well. They've announced pretty good profits for the quarter. When we look at it from that perspective, our macros are fairly good. Fundamentally, they look pretty all right. But do you think that there is a need for this kind of nervousness, and most of it in the market is all our domestic investors mostly? See, the large cap companies are always considered to have the resilience and the strength to withstand any global adverse impact on their bottom line. So to that extent, you do see that the large cap companies continue to hold their own by and large in the stock markets. But even there, I would say that all Indian companies will have to account for the adverse impact of not only higher crude oil prices, but also a depreciating rupee, because the exposure of many large Indian companies to the rupee and the foreign exchange loans are quite substantial. So therefore, the markets will continue to reflect the worries on account of higher crude oil prices and a volatile rupee. आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर, उसके बाद समग्र चर्चा करेंगे हम शेयर बाजार पर। पहले नजर डालते हैं एशियाई शेयर बाजार पर, जहां कुल मिलाकर तेजी बनी रही। अमेरिका और चीन के बीच कारोबारी तनाव को कम करने के लिए चीन सरकार की ओर से कारोबारी तनाव के प्रभाव को कम करने के लिए चीन सरकार की ओर से वित्तीय प्रोत्साहन उपाय लागू किए जाने की उम्मीदों में चीन के शेयर बाजारों में आज तेजी बनी रही। शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 1.3% लाभ के साथ बंद हुआ। हांगकांग के हिंगसेंग में 1.18% की बढ़त देखने को मिली। जापान का निक्केई 1.06% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 1.17% ऊपर उठकर बंद हुआ। उधर दक्षिण कोरिया में लगभग फ्लैटिश टोन बना रहा। कोस्पी सूचकांक 0.02% की बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपीय बाजारों पर ध्यान दें तो अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार लिखे जाने तक सभी प्रमुख सूचकांक बढ़त के साथ चल रहे थे। लंदन का FTSE 100 0.26%, फ्रांस का CAC 40 0.21% और जर्मनी का DAX 0.16% ऊपर चल रहे थे। U.S. stocks rose yesterday, led by technology and consumer sectors, as investors judged the latest exchange of blows in a trade war with China as less damaging than first feared. The Dow Jones Industrial Average ended up 0.71%, and the S&P 500 climbed 0.54 points, and the Nasdaq Composite surged 0.76%. AKB, at this point, we've seen that India also feels that this isn't such a fearful fight that's happening. We've seen the US markets also react, and even the Asian market also reacted completely opposite, contrary to what should have been the reaction. So,
do you really think that this is going to be a dampener, as it's always been portrayed, this trade war? Well, I think we still don't know what kind of beast will it be. The US is not been consistent over what its stance would be on trade policy stance vis-a-vis China and other countries on the last several months. It has almost been blowing hot and blowing cold. Just a week ago, it was trying to send out a message that yes, it is against Chinese imports, but it is not that opposed against imports from other countries. In other words, it was trying to build a coalition of forces among Europe and Japan and aimed against China. But what we see just now, what's happening is US is once again back to saying that why only China, but all my other trading partners who are trying to take advantage of a liberal trade regime followed by the US must pay the price. So I think the uncertainty over the trade stalemate, so to say, that is happening right now will continue, and the US stock market, of course, is reacting for different reasons. The US is doing very well. The banking system is in command. The US growth scenario is still looking very bright, and the tax rates have been cut. So there is a lot of, and the job situation is getting better in the US. So if you look at the US economy, is almost in the pink of its health, and which is what the stock market in the US is reflecting. But what is happening in the emerging markets, just because of that, is money is likely to be pulled out, with the crude oil prices still going up, and the currency depreciation in the emerging markets, particularly led by Turkey and Argentina, and now India has joined that league. It looks to me that the pain for the Indian market is not going to be over in a short time. So this brings me to the next question, that this body posturing of United States always brings in a sense of uncertainty. As you correctly said, on one hand it tries to build a consensus with Japan and Europe on one side, and then it completely goes contrary to that and says, I'm going all alone and I'm going to do a bull attack here. Yeah. But when we take India in perspective and the Indian economy as such, do you think that we are well cushioned, or considering the present situation, or we need to do lots more to cushion ourselves? We are not as vulnerable as we were in 2013. There is no doubt about it. But our current account deficit has widened to almost 2.5% of GDP from 1.9% of GDP in the last year. Now, with crude oil prices hovering at around $76-77 per barrel, rupee having slipped from around 68 to 72, clearly India's macroeconomic balance is being severely challenged. The good news is that India's fiscal consolidation program continues to stay intact, and the recent announcements made by the finance minister are extremely assuring, to the extent that the government has staying committed to meeting its fiscal deficit target. Now, these messages are of great comfort, and if the markets haven't responded more nervously, it is largely because of these comforting statements that the government has been making over a period of time, including steps to prevent further deterioration in India's oil economy, steps to make sure that the rupee doesn't move down further and further. So therefore, all told, yes, the situation is not as vulnerable as it was in 2013, but we need to be watchful. The situation is quite fluid. Our import and export gap is widening. So therefore,
we need to be watchful of our macroeconomic numbers. आशंकाओं के बादल हैं जिन पर हमने चर्चा की, हमें सावधान सतर्क रहने की कहने आवश्यकता है, लेकिन जो सिल्वर लाइनिंग कहते हैं वो कहाँ दिख रहा आपको, और निर्यात के मोर्चे पर कहाँ हमारे लिए संभावनाएं बन सकती हैं ऐसे माहौल में भी? आपने निर्यात की बात कही जी। अगर हम जुलाई और अगस्त के जो नंबर जो आए हैं अभी तक, उसमें देखेंगे कि तो निर्यात की जो एक वृद्धि दर है उसमें बढ़ोतरी आई है जी। वो मैं मानता हूं कि एक आशा की किरण आप कह सकते हैं, क्योंकि अगर जुलाई और अगस्त का अगर मंथ ऑन मंथ अगर आप इसको तुलना करें तो अगस्त की जो विद ट्रेड घाटा जो है वो कम हुई है। नॉर्मली हमारी जो मंथली घाटा होती है 19-20 बिलियन डॉलर की होती है, अगस्त में 18 बिलियन डॉलर आ गई है। तो मैं मानता हूं कि जो निर्यात में जो एक उछाल आया है उसको हमें बरकरार रखना है, और ये भी हमें देखना है कि ये जो निर्यात में जो वृद्धि आ रही है वो किस कारण से आ रही है और किस सेक्टर से आ रही है। और ये अगर इन्वेस्टमेंट्स जो रुके हुए थे पिछले कई सालों से, अगर जो और इन्वेस्टमेंट जो बढ़ गए हैं पिछले 6 महीने 7 महीने से इन्वेस्टमेंट बढ़ गए हैं इकोनॉमी में, उसके कारण हुए हैं, तो मैं मानता हूं कि ये जो आशा के किरण जो आप कह रहे हैं वो आशा की किरण ही रहेगी, बड़ी धूप खिली हुई धूप हमें दिखेगी। तो यही हमें देखना है कि कितनी देर तक, क्योंकि एक्सपोर्ट जो है हमारी इकोनॉमी की बहुत बड़ी एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है, वो एक हमारे विदेशी मुद्रा तो वो लाती है, पर उसके साथ साथ एक्सपोर्ट सेक्टर जो है वो हमारी इकोनॉमी में नौकरियों का जो जरूरतें बहुत हद तक पूरी करती है। यहाँ पर आपने बहुत अच्छी चर्चा की, वहाँ निर्यात के मोर्चे पर सेवा का निर्यात यानी वित्तीय सेवाएं हैं उनका निर्यात हमारे यहाँ से होता है, खासतौर से आईटी से जुड़ा हुआ। रुपए का जो अवमूल्यन हुआ है निश्चित रूप से चिंता का विषय है, लेकिन यदि हम उस मोर्चे पर देखें और हमारे उत्पाद कहाँ कहाँ लाभकारी साबित हो सकते हैं, उन क्षेत्रों को यदि हम चुनना चाहें तो वैश्विक रूप से अमेरिका मजबूत हो रहा है, आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। यूरोपीय देशों में भी जर्मनी लगातार वित्तीय 2008 की मंदी के बाद से भी एक मजबूती वहां की अर्थव्यवस्था में बनी हुई है। फ्रांस में भी लगभग वही स्थिति हम देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर हमारे लिए आसार कहां बन रहे हैं? देखिए, निर्यात की जो बात आपने की, अगर रुपए का अवमूल्यन जो भी हुआ है वो निर्यात के लिए एक बहुत खुशखबरी है जी, क्योंकि अगर रुपए की अवमूल्यन होता है तो हमारा जो निर्यात जो है उसकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जिसे हम कहते हैं वो बढ़ जाता है जी। और उसी तौर से रुपए के अवमूल्यन से जो आयात के ऊपर एक स्वाभाविक अंकुश लग जाता है जी। तो मैं ये मानता हूं कि ये निर्यात और आयात का जो बीच में जो एक अंतर था वो कम होने का एक कारण ये भी है कि रुपए के अवमूल्यन। तो जो लोग रुपए के अवमूल्यन के बारे में बहुत दुखी होते हैं उनको ये जानना चाहिए कि रुपए का अवमूल्यन बहुत बड़ी गलत चीज नहीं है। हालांकि देशों में दाम बढ़ जाने की आशंका होती है, पर निर्यात और आयात के लिए हमारे देश की ओवरऑल अर्थनीति के लिए ये एक अच्छी चीज है, क्योंकि रुपये को अपनी दाम में आना और आने देना बहुत जरूरी चीज है। रुपए की चर्चा हुई तो यहां थोड़ा और विस्तार देना चाहेंगे और समझना चाहेंगे रुपए की क्या स्थिति रही आज। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 60 पैसे मजबूत हुआ है। 72 रुपए 37 पैसे के स्तर पर रुपया आज पहुंच गया है। कल रुपया अपने न्यूनतम स्तर 72 रुपए 58 पैसे के स्तर पर पहुंच गया था। यहां पर हम रुपए के साथ साथ जो विकासशील देशों की मुद्राएं हैं उन पर भी आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि जो हमारा यानी जिसे वृहत आर्थिक ढांचा कहते हैं उसे देखते हुए और अन्य जो तुलनात्मक रूप से जो हमारे कॉम्पिटिटर देश, प्रतिस्पर्धी देश हो सकते हैं, उनकी तुलना में हमारा रुपया कहां टिक रहा? देखिए, अगर आप तुर्की की बात करते हैं या अर्जेंटीना की बात करते हैं, जो हमारा जो रुपये का जो अवमूल्यन हुआ है वो काफी कम हुआ है। हमारा रुपये का अवमूल्यन अभी तक 11, 12, 13% तक हुआ है, जो भी आप स्तर लेंगे। पर तुर्की और अर्जेंटीना के अवमूल्यन बहुत ज्यादा हुआ है। पर अगर हम हमारी इस प्रतिस्पर्धी देशों के साथ तुलना करेंगे, हमारा अवमूल्यन थोड़ा ज्यादा हुआ है। चाइना का युआन अभी तक
8% का अवमूल्यन हुआ है। अगर वियतनाम देखें, बांग्लादेश देखें, जो हमें एक्सपोर्ट्स के मार्केट में, निर्यात के मार्केट में हमारे साथ काफ़ी कम्पीट करती है, उनका अवमूल्यन हमसे कम हुआ है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो हमारी जो निर्यात करने की क्षमता है वो उसमें एक बढ़ावा मिलेगा, एक जोर आएगा, उत्साह मिलेगा ज़्यादा। पर जो हमारी जो रुपए के अवमूल्यन ज्यादा हुआ है उसके भी कारण काफी हैं, क्योंकि रुपए के अवमूल्यन का कारण के मतलब ये है कि हमारी देश में विदेशी मुद्रा की जो खपत जो है वो खपत बढ़ गई है कि नहीं। प्रश्न तो यही है कि इस वक्त जो हमारी जो ट्रेड डेफिसिट जो पिछले एक साल से बढ़ती आ रही है उसके कारण और क्रूड ऑयल प्राइसेस का दाम बढ़ने के लिए क्या हुआ है कि मार्केट में बहुत ज्यादा विदेशी मुद्रा के डिमांड बढ़ गया है और उसी हिसाब से विदेशी मुद्रा मार्केट में नहीं है। वही डिमांड और सप्लाई की एक गैप से रुपए की जो मूल्य है वो नीचे आ जाता है और वही हमारा हुआ है कि रुपए की जो अवमूल्यन जो हुआ है वो इसी एक प्रधान कारण यही है। तो मैं ये मानता हूं कि ये तो हमारी अगर देश की अगर मान लीजिए आयात के ऊपर अपने आप ऑटोमेटिकली थोड़ी रोक लग जाए, निर्यात बढ़ता गया तो ये गैप कम हो जाएगा। मैं मानता हूं कि ऑटोमेटिकली आप देखेंगे रुपए की जो स्थिरता आ जाएगी और हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएगा। और जो चीज आपने जिक्र की वो है कि सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में भी काफी इजाफा आने की बहुत उम्मीद कर सकते हैं हम। On this good note, we've got the commodities market having a positive situation. Look up here. Leading stock exchanges BSE and NSE have received market regulator SEBI's approval to launch commodity derivative segment from the 1st of October. BSE will enter the segment with non-agriculture commodities like metals initially, followed by agri-commodities subsequently. The Securities and Exchange Board of India, SEBI, last December announced that from October 2018, the country would have a unified exchange regime wherein stock exchanges would be allowed to offer trading in commodities derivatives. AKB, a very interesting story. What does this indicate for our stock market? I think it's a very important development. The two things have happened here. Number one, you have a situation in our capital markets where we are far too focused on the stocks, little realizing that commodities turnover in our country actually is more than your stocks turnover. And in spite of that, even in Market Mantra, we spend more time on stock prices rather than what is happening in the commodities market. I think the SEBI's decision to give a big push to commodities trading is to be complimented. This is something that is recognizing the ground reality. Now, what SEBI has done? What SEBI has done is to allow the stock exchanges also to start trading in commodities. So far, what used to happen was commodities exchanges were separate exchanges. They had a different regulatory framework. They were responding to a different regulator. Now, over the last few years, we have gradually attacked the problem of this separation. Nowhere in the world these are separate. Now, here they were separate. Now, what we are allowed is a stock exchange like National Stock Exchange can also deal in commodities. So therefore, once they are brought under the fold of your stock exchanges, you will see that a lot of people who are otherwise unaware or did not see an opportunity of trading in commodities, and which ensures a very more transparent price discovery, they will be encouraged to go there, and you will see that the commodity market will go through a kind of a price discovery mechanism by which they also grow and they can take part in the overall economic processes of the country. AKB, यहाँ पर हम बिल्कुल बुनियादी सवाल पूछना चाहेंगे अपने आम श्रोताओं के लिए कि ये कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट है वो क्या है, और जैसा कहा गया है कि मेटल आरंभिक रूप से और बाद में उसमें एग्री कमोडिटी भी जोड़े जाएंगे, तो बिल्कुल सरल भाषा में ये बता दीजिए कि ये जो बदलाव आया है
तो किस तरह के सामान कह लें या किस तरह की वस्तुओं का या किस तरह की कंपनियों का उत्पाद अब नए सिरे से मार्केट में खरीद बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएगा? अच्छा सवाल किया आपने। स्टॉक में क्या होता है कि स्टॉक, जब हम कंपनी की स्टॉक ट्रेड करते हैं, ये कंपनी का जो एक ओनरशिप है वो 10 रुपए का शेयर हो, वो कंपनी की एक ओनरशिप स्टेक होती है, उसके ऊपर ट्रेड करते हैं हम, और उसकी एक प्राइस बन जाती है मार्केट में, स्टॉक मार्केट में। कमोडिटी डेरिवेटिव्स में क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए या प्याज या तेल या आलू या सीमेंट या स्टील को तो आप ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि उनके वॉल्यूम चीज है। तो स्टील जैसे एक कमोडिटी की एक डिराइव्ड एक इंस्ट्रूमेंट बना देते हैं कि ये स्टील पेपर मान लीजिए या स्टील बॉन्ड कह दीजिए उसको, और उसी बॉन्ड को मार्केट में ट्रेड होता है कि एक 10,000 टन का स्टील अवेलेबल के मार्केट के ऊपर मान लीजिए एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, और उसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ट्रेडिंग भाव लगाकर कि मतलब जो ट्रेड होता है वो स्टील नहीं होता है, जो ट्रेड होता है वो स्टील का जो डेरिवेटिव पेपर है, इंस्ट्रूमेंट है, वो होता है। अगर वो इंस्ट्रूमेंट आपके हाथ में है तो वो आपको जो ओरिजिनल स्टील कमोडिटी है उसके साथ लिंक्ड है। तो एक ये बहुत ही एक रिफाइंड सोफिस्टिकेटेड तरीके का ट्रेडिंग है जिसमें कि एक्चुअल कमोडिटी का ट्रेडिंग नहीं होता है, पर कमोडिटी को वो एक आधारभूत बना के ये चीज एक मिल जाती है आपको। Another good news. State Bank of India, SBI, is in the international bond market to raise nearly $500 million in green bonds, making it the maiden issuance for the lender. With this issue, SBI will become compliant with the global standards. Over the past 2 years, domestic companies have raised $6 billion in green bond sales, led by Exim Bank, Yes Bank, Axis Bank, and green power player Renew Power. AKB, quickly, what is green bonds? Well, green bond is any borrowing instrument which is used. The money raised from that bond is used for projects that are not going to increase the carbon footprint. In a sense, if you raise money through a bond and that money is used for setting up, for instance, a hydel project, or let us say setting up a solar power plant, but not a thermal power plant. So if you use that money for creating or setting up a project that helps reduce the carbon print, then that's called a green bond. If you see more green bond is being used, World Bank is very particular, a country that launches more green bonds, they are giving you a plus point because you are helping in climate change mitigation. Thank you. We'll look at the oil market now. The oil prices today eased but held near its highest level this year as concerns that producers may fail to cover a supply shortfall once U.S. sanctions on Iran come into force outweighed an increase in U.S. inventories. Brent crude prices in intraday trade today were trading around $78.30 per barrel, while WTI prices were at around $69.57 when reports last came in. आइए सर्राफा बाजार चलें। दिल्ली सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की चमक तेज रही है। सोने का मूल्य 50 रुपए बढ़ा 31,660 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी 300 रुपए उछलकर 38,000 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई। कारोबारियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर कमजोर होने से सोने के मूल्य में आज तेजी बनी। चीन द्वारा अमरीकी सामान पर शुल्क लगाए जाने की जवाबी कार्रवाई के बावजूद डॉलर में आज कमजोरी देखी गई, जिसका लाभ सोने के मूल्य में बढ़त के रूप में देखने को मिला। इसके अलावा घरेलू बाजार में आने वाले त्योहार के मौसम को ध्यान में रखकर आभूषण निर्माताओं ने खरीदारी की, जिसका लाभ सोने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी सोने का मूल्य 0.4% बढ़ा $1,202.70 प्रति औंस पर पहुंच गया। और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से हम आपको AKB बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। नमस्कार। Thank you, AKB. Before we close, the reminder of the headlines. Benchmark domestic stocks fall for third session in a row. Sensex loses 169 points to 37,121. Nifty slips 45
points to 11,294. Rupee bounces back from its record low to trade at 72 rupees and 37 paise against the US dollar. And Brent crude prices eased to trade around $78.30. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.